Hello everyone. Hope you all are fine, staying safe and happy at your homes. So today we will be joining our session of prepositions. This would be the second session of the same topic preposition. In the last class I told you about the different prepositions. Those who haven't seen, I'll share the link in the description box. Please do watch that. But in this class, we will be talking about some of the common prepositions in which we make difference or in which we are not able to decide which preposition to use. So, I hope I am audible to you all. If yes, please do respond it so that we could start up with the session. This would be an interactive session where I do need your response properly. That is, I have created different exercises which you will be liking, which are picture based, and you need to fill the preposition deciding which preposition to use. So just let me know, am I audible, so that we could start the class. Is everything fine? Please, anyone can do reply if am I audible or not. Okay, fine. Thank you for responding. So we'll start our session with the two common prepositions with and by, and you need to tell me where to use with and where to use by. See, I won't make you feel boring, but we'll start with the session. With और by, हमें कितनी बार confusion हो जाता है कि हमें with कहाँ पे use करना है और कहाँ पर by. So students, remember, with needs to be used with an instrument and by when we are talking about who is doing the action. Means basically living organisms जो action कर रहे होंगे, आपको उनके लिए use करना होगा by, और अगर कोई instrument है, stick, pencil और any other object, आपको उनके लिए use करना होगा with. So for instruments we use with, for actions or for the doers or for the living organisms we use by. For example, you can see a simple example on your screen, that is, cut it with a knife. So with, why? Because a knife is an instrument. The snake was killed with a stick. With, because a stick is again a non-living thing. But if we talk about by, the kitchen is being cleaned by David. So we are talking about the person who did the action, David. So we used by. The book was written by Sarah. Sarah is again a doer. So the book was written by Sarah. A simple difference. So just tell me, I'll be speaking up a sentence and you need to tell what you'll be filling. The snake was killed dash him. The snake was killed dash him. By perfect because it's an action. And if I'll say the letter was written dash Ram, the letter was written dash Ram. By Ram, perfect. Dash a pencil. The letter was written by Ram dash a pencil. See, if we are talking about dash a pencil, the pencil is an instrument. So with a pencil. So it's simple that the letter was written by Ram with a pencil. Moving ahead to the next comparison. Between and among. We'll be talking about these two common prepositions. We always get confused where to use between and where to use among. See, between is used when we are talking about two
simple categories. It could be 2 points, two objects, two people, or any comparison between two people, and sometimes between two parties as well, or more as well, between two or more. But among is used when we are talking about the whole category being included or happening in groups of things or people. So it's so simple. When we are talking of group of things or people, we will be using among, and when we will be talking about two peoples or 2 points objects, then we will be using between. The very first example will make you more clear. Q comes between P and R. तो दो अल्फाबेट्स की बात हुई. दो अल्फाबेट्स के बीच में क्या आ रहा है? Q. We have used between. I sat down between Joe and Dinah. So between, why we have used between? क्योंकि वो दो जनों के बीच में बैठा है. Next, Switzerland lies between France, Germany, Austria and Italy. See, here it is not two, but still we have used between when we are talking about different countries. But when we are talking about a complete category, then we will be using what? Among. For example, an American woman was among the survivors. पूरे survivors की, पूरे group की बात हो रही है. Next, he was among the last to leave. पूरी category की बात हो रही है, उनसे last थी. The attitude is common among teenagers. पूरे teenagers की बात हो रही है कि teenagers के सामने या के साथ ये attitude common है. तो when we are talking about a group of people, we'll be using among. But when we are talking about two people, we'll be using between. Moving ahead. But first, I'll ask you a sentence again so that you're clear with the concept. He distributed his property dash his two sons. He distributed his property excuse me, dash his two sons. जब दो sons के बीच में property distribute हो रही है, so which preposition would be used? Between. Very good. Next, if I'll say a treaty was signed dash three parties. अब एक contract sign हुआ three parties के बीच में. Now what you will use? A treaty was signed dash three parties. Fine. Great. Between. A treaty was signed between three parties. When it's fixed, it's not important that only two objects would be used, then only between be used. Between तब भी यूज हो सकता है जब हम किसी closely association की बात करें, closely associated people की बात कर रहे हैं. Next, he distributed his property dash the poor. He distributed his property dash the poor. उसने अपनी property, yes, very good students, among the poor, because poor सिर्फ दो नहीं हो सकते या तीन नहीं हो सकते, कितने भी हो सकते हैं. We are talking about the group of people, so it's among. He distributed his property among the poor. But if I say he distributed his property dash his two sons, जब दो sons के बीच में, then it would be between. Next, a simple difference where we do mistakes is between under and below. Up, students, remember, under and below both are both denote something that is नीचे. दोनों का मतलब होता है नीचे होता है. अंडर का मतलब भी नीचे होना होता है और बिलो का मतलब भी नीचे होना होता है. बट अंडर इज यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन फिजिकल कॉन्टैक्ट. जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं तब अंडर यूज होता है. और जब कोई चीज़ दूसरे के नीचे हो बट टच नहीं कर रही हो, लोअर देन दैट, देन वी यूज बिलो. सो बिलो इज यूज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स are lower, when one object is lower than the other. But under is used
when two objects are touching each other or it's covering each other. Okay, so if I'll give you a simple example, he placed the lamp dash the almirah. अब उसने लैम्प को अलमीरा के नीचे प्लेस कर दिया, सो इट वुड बी बिलो. बट if I am talking about under, it must be touching each other. So he put the books under the pillow. जब books pillow के साथ contact में हैं, we have used under. But when they are not in contact, we have used below. Remember, I hope you all got the difference between under and below. Moving ahead to the next slide. For example, I do have one more example of below. There was a big clock below the painting. अब clock और painting एक दूसरे को touch नहीं कर रहे हैं. Clock painting के नीचे है, lower than that. So we have used below. And if they would have been touching, we would have used under. The next comparison is of in and within. अब हमें in कहाँ पे लगाना है और within कहाँ पे लगाना है. देखिए स्टूडेंट्स, in डिनोट करता है बिल्कुल लास्ट टाइम कि इतने स्पैन में कर देंगे आप, और विदिन होता है आपको उस स्पैन के अंदर ही अंदर करना है वो काम. ओके, आई डू रिपीट, इन होता है जब बिल्कुल आपके पास लास्ट टाइम हो, बिल्कुल लास्ट एंड पॉइंट कि आप इसके बाद नहीं कर सकते हैं. बट विदिन इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कंप्लीट द वर्क इन अ मंथ. मैं ये काम एक महीने में कर दूंगी, लास्ट टू लास्ट 1 मंथ में. बट आई कैन रिपेयर द कार विद इन 2 hours. उस ड्यूरेशन के अंदर कर दूंगी, देन आई विल बी यूजिंग विद इन. बट इफ आई एम हैविंग द लास्ट एंड पॉइंट, आई विल बी यूजिंग इन. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी, इट विल बी रेडी इन अ वीक टाइम. एक हफ्ते में हो जाएगा, 1 week में, लास्ट टू लास्ट. बट द एम्बुलेंस अराइव्ड विद इन 10 minutes. उस ड्यूरेशन में आ गई ना. नेक्स्ट, कंज्यूम विद इन 2 days ऑफ परचेज. 2 दिन के अंदर अंदर यूज कर लो, उसके बाद नहीं. सो वेन यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, देन यू हैव टू यूज विद इन. बट इफ़ यू आर हैविंग अ फिक्स टाइम, एक पर्टिकुलर लेंथ है आपके पास, इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ फ्यू आवर्स और डेज और मंथ्स, देन यू विल बी यूजिंग इन. सो विद इन जब आपके पास ड्यूरेशन है और इन जब आपके पास फिक्स्ड लेंथ है. ओके, टेल मी, आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस, व्हाट यू विल बी यूजिंग बिटवीन द टू, इन या विद इन. इन, यू हैव टू चूज बिटवीन दीज टू. आई विल राइट अ बुक dash 3 months. I will write a book dash 3 months. Very good. In 3 months. Great students. Now, if I'll say, he can solve this question dash an hour. He can solve this question dash an hour. Then it would be what? Yes, within an hour. जब आपके पास ड्यूरेशन है कि आप 1 hour के अंदर अंदर कर लेंगे, then it would be within. But if you have a time span of 3 months, then you will be using, the end point is 3 months in. Okay, the next. This is the most common error. You might even don't know when to use beside or when to use besides. ये वर्ड तो कोई preposition में यूज़ ही नहीं करता. And the most common mistake which you all can do in the case of editing and omitting, बहुत सिंपल सी मिस्टेक होती है. देखिए, beside कब यूज़ होता है? जब कोई चीज़ आपके साथ में हो, बिल्कुल नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ समबडी और समथिंग. इफ़ आई एम सेइंग आई एम सिटिंग बिसाइड टू, और देयर इज़ अ चेयर बिसाइड मी, बिल्कुल साथ ही में है मेरे, बिल्कुल नेक्स्ट में है.
we use the word beside. अब अगर हम बात करें besides की, besides का मतलब होता है in addition में, इसके अतिरिक्त या फिर इसके अलावा। तो जब मेरे पास इसके अलावा वाली बात हो रही है, आई एम यूजिंग द वर्ड बिसाइड्स। और जब मेरी बात हो रही है बिल्कुल साथ वाली चीज़ की, देन आई विल यूज द वर्ड बिसाइड। तो साथ के लिए बिसाइड, उसके अलावा इन एडिशन के लिए बिसाइड्स। इफ वील कंसिडर द एग्जाम्पल, ही सेट बिसाइड हर ऑल नाइट, उसके साथ ही रहा, बिल्कुल उसके साथ ही बैठा रहा, तो दैट इज बिसाइड। अ मिल बिसाइड अ स्ट्रीम, जो फैक्ट्री है वो स्ट्रीम के, जो रिवर है, स्ट्रीम है, उसके बिल्कुल साथ है। बट अगर हम बिसाइड्स की बात कर रहे हैं, शी हैड 2 डॉग्स बिसाइड्स 3 कैट्स, मतलब 2 डॉग तो है ही है, उसके साथ साथ, उसके अलावा उसके पास 3 कैट्स भी हैं। सो गॉट द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स? I'll be speaking one sentence again and you need to tell me what will be the answer. He has a car dash a motorcycle. He has a car dash a motorcycle. जल्दी से बताइए, what will be in the gap? He has a car dash a motorcycle. वेरी गुड। बिसाइड्स, उसके पास कार तो है ही है, साथ में मोटरसाइकिल भी है। अब साथ साथ तो नहीं खड़ी कि कार भी खड़ी है और मोटरसाइकिल नहीं, अगर उसके साथ है तो बिसाइड्स। नेक्स्ट बताइए। अगेन यू नीड टू टेल बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। इस वाले केस में ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, उसके साथ कार भी है और मोटरसाइकिल भी है। नेक्स्ट, ही वॉज सिटिंग डैश सरला। Now tell in this case, he was sitting dash Sarla. Very good, Sahil. He was sitting beside Sarla. Sarla के साथ था. Okay. The next which we'll be talking about is ago and before. Now, when to use ago and when to use before. See, both are used in case of past tense. Past मतलब जो हो चुका है, जो हो चुका है उसको बताने के लिए हम अगो भी यूज़ कर सकते हैं और बिफोर भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगो कब करते हैं? टू अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कंप्लीटेड, जो कब का हो चुका है और अभी भी चल रहा है तब से। जैसे इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले से चल रहा है। अब बिफोर की बात करते हैं। बिफोर कब यूज़ होता है? अर्लियर देन समबडी और समथिंग। आई डिड माई वर्क बिफोर लंच, लंच से पहले। द डे बिफोर येस्टरडे, उससे पहले। अब देखो, दोनों चीज़ें पहले डिनोट कर रही हैं, पास्ट डिनोट कर रही हैं, बट द एक्शन दैट इज रेफरिंग टू अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कंप्लीटेड, वो काम जो टाइम जा चुका है, उस टाइम के लिए हम अगो यूज़ करेंगे। और जिसकी बात चल रही है, किसी से पहले प्रेफर कर रहे हैं हम, earlier than somebody or something, we'll write before. Let's discuss upon the example. For example, it happened a long time ago. अब बहुत पहले हो चुका है, ये इवेंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, दे अराइव्ड इन एथेंस 6 weeks ago. अब हो चुका है, 6 weeks पहले आए थे। ओके, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? बिफोर, द ईयर बिफोर लास्ट ही वॉन अ गोल्ड मेडल। तो कंपेयर कर रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं कि उससे पहले। नेक्स्ट, द ईयर बिफोर दैट ही वॉन अ सिल्वर, उससे भी पहले उसने सिल्वर लिया था। अगेन वी आर जस्ट denoting somebody or something before than that. So in when we are earlier than somebody or something, we have to use before, and when it is the action which is completed, we have to use ago. A simple sentence again, you need to tell me what to fill between ago and before. He came 3 days dash.
He came 3 days dash. Very good. Vanshika and Sahil. Ago, पहले आया था क्या? कंपैरिजन बोला मैंने किससे पहले? नहीं. बट अगर इस क्वेश्चन हो, द ट्रेन हैड लेफ्ट डैश ही रीच्ड द स्टेशन. द ट्रेन हैड लेफ्ट डैश ही रीच्ड द स्टेशन. बिफोर. परफेक्ट. जब वो स्टेशन पे पहुंचता उससे पहले ही ट्रेन चली गई थी, तो कंपैरिजन हुआ ना, अर्लियर देन समबडी और समथिंग. स्टेशन की बात हुई है तो इट इज यूज्ड बिफोर, बट अगर किसी की बात ना हो तो अगो. ग्रेट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, these are again the most two common words in which you make mistakes is regarding off and OFF off. अब हम off कब यूज करते हैं? when something is belonging to somebody or relating to somebody. जब कोई चीज़ किसी से रिलेट कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं ऑफ. जैसे कि आप देख सकते हैं, belonging to somebody and relating to somebody, we use the word OF off. A friend of mine, मेरा फ्रेंड, किसी की belonging दिखा रहे हैं. The love of a mother, मदर का प्यार दिखा रहे हैं, we are relating it to the love of a mother. The role of the teacher, we are again relating the role of a teacher in the student's life or in somewhat. So these are the relations, and for the relations we use the word OF off. But if we are talking about OFF off, it's before or away from a distance. I fell off the ladder. वो दूर हो गया है उस चीज़ से. जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी से दूर होता है, दूर हटने की बात आती है, वी राइट द वर्ड OFF off. अगर वो दूर हट रहा है, और अगर रिलेट कर रहे हैं देन वी राइट OF off. कीप ऑफ द ग्रास, उस ग्रास को दूर करो. एन आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ स्पेन, जो दूर है स्पेन से. सो अगेन आई विल आस्क अ सेंटेंस एंड यू नीड टू रिप्लाई. He is a member dash our family. You again need to use two words, of, OF and OFF off. Tell me, he is a member dash our family. Very good. OF off हमारी फैमिली का मेंबर है, हम रिलेट कर रहे हैं उससे. नेक्स्ट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट he jumped dash the tower. अब वो टावर से दूर हो गया है. जब कोई चीज़ किसी से दूर होती है वी यूज द वर्ड OFF off. परफेक्ट. ही जम्प्ड ऑफ द टावर. अब ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ. ऑफ यहाँ पे क्या कौन सा यूज होगा? OFF ऑफ, क्योंकि वो ड्यूटी पे नहीं है अब. तो यू नीड टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दीज सिंपल वर्ड्स विच विल हेल्प यू while you're writing or you are searching the mistakes in the grammar portion. Next, these are the three prepositions for, during and while. बहुत कॉमन सा डिफरेंस है for, during and off में. हम उनको डिस्कस करेंगे so that you will be more clear. We use for with a period of time to refer to the duration. जब हमारे पास ड्यूरेशन हो, हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट, कोई चीज़ कितनी देर में ख़त्म होगी. फॉर एग्जाम्पल, वी यूजली गो देयर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. कुछ टाइम के लिए, ड्यूरेशन फिक्स्ड है. बट नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग की. ड्यूरिंग रिफर्स टू द होल टाइम ऑफ द इवेंट. पूरे टाइम को डिनोट कर रहे हैं. अब जैसे मैं बात करूँ ड्यूरिंग द लाइव क्लास, मैं पूरे लाइव क्लास के बात कर रही हूँ. सो जब मैं पूरे इवेंट के बारे में बात कर रही हूँ आई विल बी यूजिंग द वर्ड ड्यूरिंग. फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग क्लास. क्लास के पूरे टाइम में आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है.
आई हैव टू ओपन माई विंडो ड्यूरिंग द नाइट, पूरी नाइट में को ओपन करनी है, किसी लिमिटेड टाइम के लिए नहीं। तो जब हम एक पूरे टाइम को डिनोट करते हैं, वी राइट ड्यूरिंग। एंड इफ I'll be denoting some part, I'll be using the word for. For example, the live class was very good for first 10 minutes. तो मैंने ड्यूरेशन बता दी कि पहले 10 मिनट्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद की नहीं। तो for the limited duration, during for the entire event. नेक्स्ट अगर अब हम बात करें while, we can use while or as to talk about two longer events or activities happening at the same time. जब दो चीज़ें एक ही टाइम पर हो रही हैं तब हम यूज़ करते हैं वर्ड while. We spent long evening talkings in my sitting room while he played the music. जब वो म्यूज़िक प्ले कर रहा था, तो जब दो इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, we are using the word while. जब पूरे इवेंट की बात कर रहे हैं, we will use the word during. And when we have a perfect duration, we will use the word for. Am I clear? I'll give you just a simple example and you need to tell what you will be filling out of these three. आराम से सोच के. It rained all Sunday but stopped dash the night. It rained all Sunday but stopped dash the night. Very good. I'm getting up the correct answer. Yes, it stopped during the night, क्योंकि ना ही मैंने फिक्स ड्यूरेशन दे रखी है एंड ना ही मैंने आपको ये बताया है कि दो इवेंट साथ हो रहे हैं, ऐसा कोई भी केस नहीं है. सो वी हैव टू यूज द वर्ड ड्यूरिंग. नाउ what all you have understood, you need to tell me in the answers. As you can see the figure, now how we will use the prepositions in our day-to-day life. So there are various gaps as you can see in the figure and you need to tell. So this figure contains 5 fill-up as you can see and you need to tell the answer by 1, 2, 3, 4 and 5. Write down 1, 2, 3, 4 and 5 and tell the answers by looking at this figure. Dash the picture, I can see a woman. Hurry up, tell the answer of this one. Picture में मैं एक woman देख रही हूँ. What you will write? Yes. In the picture, I can see a woman. The woman is sitting dash a table. Now tell me. Behind. उसके पीछे है table? No. The woman is sitting dash a table. Woman on भी नहीं बैठी है, उसके बिल्कुल साथ में भी नहीं है. The woman is sitting in front of a table. Next, she is sitting dash a chair. वो chair के ऊपर बैठी है. And when we talk about the surface, we use which preposition? Yes, on. She is sitting on a chair. There is another chair dash the woman. एक और चेयर है woman के साथ या सामने. Yes, besides the woman. Next,
There is another chair besides the woman. Her feet are dash the table. Yes, her feet are under the table. Perfect. The picture is not yet complete. The woman is holding a cup dash her hands. The woman is holding a cup dash her hands. Very good. In her hands. Dash the table are a laptop, a paper, a calculator, an appointment calculator, calendar, two pens and a muffin. ये सब कहाँ पर है? At the table. A specific point. When we have a specific time, when we have a specific point, we use the word at. At the table are a laptop, a paper, a calculator, an appointment calendar, two pens, and a muffin. The woman is looking dash her laptop. The woman is looking dash her laptop. To her laptop. ऑन नहीं आएगा. ऑन लगाते जब वो उस पर बैठा होता है, सरफेस पर हो कोई चीज़. The woman is looking to her laptop. Some will think into. In the last class I told you into shows movement. जब कोई चीज़ movement में हो. Laptop movement में नहीं है. So we will be using the word to. The woman's bag is dash the table. The woman's bag is dash the table. Under. Correct. The woman's bag is under the table. Moving ahead to the next one. We'll be filling up these prepositions up till what we have studied. So, the baby is sleeping dash the bed. Let's see how much do you know your basics, or how much clear and you have gone through it so clearly and understood the topic. The baby is sleeping dash the bed. Okay, the baby is sleeping in the bed. Next, television is kept dash the room. Television कहाँ पर है रूम में? Television is kept dash the room. Yes, television कहाँ पर है? रूम में है. Television is kept in the room. Mother came dash the room after an hour. Mother came dash the room after an hour. अब मदर रूम के अंदर आ रही है, मूवमेंट शो हो रहा है. सो इनटू. मदर केम इनटू द रूम आफ्टर एन आवर. नेक्स्ट, विष्णु गोज डैश द टेम्पल ऑन सैटरडे. विष्णु टेम्पल जाता है सैटरडे को. रिमेंबर, सी बिफोर द डेज वी आर यूजिंग द वर्ड ऑन. विष्णु गोज डैश टेम्पल ऑन सैटरडे. इनटू टेम्पल. Vishnu goes to temple on Saturday. Ice cream is made dash milk and cream. Ice cream किस किस की बनी है? Ice cream is made dash milk and cream. From milk and cream. Great. Next, among is used for people, not among milk and cream. Be careful. The artist is inserted dash the music. The artist is inserted
डैश द म्यूजिक एक्टर। तो किसी एक्शन है और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्शन है कि उसने आर्टिस्ट को इंसल्ट किया है। जब कोई लिविंग, यस, बाय द आर्टिस्ट इज इंसल्टेड बाय द म्यूजिक एक्टर। ओके, द नेक्स्ट वन, फार्मर इज फेमिलियर डैश द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम। फार्मर्स को आदत है, नाउ